क्या ट्रंप की कल रात की तकरीर ईरान जंग में अमेरिका की शिकस्त का सरकारी ऐलान थी? क्या एक बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी कल रात अपने अंजाम को पहुंच गई? डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ताकत के जरिए खुलवाना चाहते थे, आज दुनिया को अपनी मदद आपका सबक क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या ये जंग ईरान पे कंट्रोल हासिल करने के लिए की गई थी या कंट्रोल खो देने के लिए? इन सवालों के जवाब हम आज के ब्लॉग में ढूंढेंगे और आखिर में ईरानी खवातीन की एक छोटी सी वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी जिसमें वो इनकलाब की 47वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रही हैं और हम देखेंगे कि क्या ईरानी खवातीन वाकई ही ऑप्रेस्ड हैं या ये सिर्फ वेस्टर्न मीडिया और पॉलिटिशियन का एक प्रोपेगेंडा है। इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात अमरीकी वक्त के मुताबिक 9 बजे कौम से खिताब किया और इस खिताब के बाद दुनिया भर में और खुद अमरीका में बेशुमार तबसरे सामने आए। Donald Trump just gave a disastrous address to the nation, perhaps the worst address to the nation in presidential history. As our editor-in-chief Ron Filipkowski writes, was the point of Trump's speech tonight to show the nation how badly he's deteriorating with more slurred, low-energy, incoherent, nonsensical rambling? If so, mission accomplished. Well, tonight, Donald Trump officially surrendered in his war for control of the Strait of Hormuz. And tonight, after saying, quote, "We are going to finish the job," end quote, Donald Trump said it is up to what he called the countries of the world to open the Strait of Hormuz now that he has completely failed to do it after threatening military power that he would use to open the strait. Here's what Donald Trump actually said. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. Those are surrender words from Donald Trump on the Strait of Hormuz. दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी हेड ने ट्रंप को जवाब देते हुए ट्वीट किया है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सबके लिए खुला है सिवाय आपके। As I stated in my announcement of Operation Epic Fury, our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force. जब ट्रंप ये दावे कर रहे थे उससे 2 घंटे पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागे और दुनिया हैरान रह गई कि जंग के 33वें दिन ईरान की रिटेलिएशन की पावर इस हद तक इंटैक्ट है। लेकिन ये साहब जो है वो मुसलसल अपनी कौम के साथ और दुनिया के साथ झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। Over Tel Aviv as a barrage of missiles hit the nation. Let's bring in Jonathan Hunt with more. Jonathan. Kayleigh, Israel in general and Tel Aviv in particular have been under almost constant bombardment throughout the day today. One of the most intense bombardments, in fact, since the very early days of this war. Just about an hour ago, we had an hour-long series of sirens. We watched as the interceptors were launched from this area at those missiles, which came in one after another from Iran. And this, remember, this is the start of the Jewish holiday of Passover, and there had been warnings from Israeli officials that they feared that Iran would try to send that kind of bombardment over. We've had some impacts throughout the Tel Aviv area and other areas. One 11-year-old girl, for instance, critically wounded. She is in the hospital. IRGC के एयर फोर्स के कोर कमांडर सैयद माजिद मुस्वी ने एक ट्वीट करके बताया है, आज जो हमने इजराइल के सेटल कॉलोनीज पर मिसाइलों की बारिश की है वो नेतन्याहू के लिए हॉलिडे गिफ्ट है। इसके अलावा IRGC ने अपने हमलों की जो लेटेस्ट वेव है उसमें दर्जनों अमेरिकी फौजियों के मारे जाने का दावा भी किया है। ईरान के जो ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल अली जहां शाह
अमरीकी खानदानों को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो अपने प्यारों के बारे में अपनी हुकूमत से इस्तफसार करें, क्योंकि इस वक्त अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने फौजियों के मारे जाने की सही मालूमात फराहम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी सदर ने भी एक खुला खत लिखा है जिसमें उन्होंने अमरीकी कौम को मुखातिब करते हुए कहा है, एग्जैक्टली विच ऑफ द अमेरिकन पीपल्स इंटरेस्ट आर ट्रूली बीइंग सर्व्ड बाय दिस वॉर? डज द मैसेकर ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, the destruction of cancer treatment pharmaceutical facilities, or boasting about bombing a country back to the Stone Ages serve any purpose other than further damaging the United States global standing? इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर भी अपनी जो कब्जा है उसको अभी तक कायम किए हुए है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में इन पानियों में तकरीबन 400 के करीब बहरी जहाज जो कि तेल और गैस से भरे हुए हैं वो इन पानियों में मौजूद है और ईरान कुछ मुल्कों को, कुछ मखसूस मुल्कों के जहाज़ों को गुजरने दे रहा है जो उसे यौन के अंदर टोल अदा कर रहे हैं। कुछ जर्नलिस्टों के मुताबिक ये एक नया नॉर्म ईरान सेट कर रहा है जो कि दुनिया के जो इस वक्त का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको हिला दे। Not put the genie back in the bottle. Iran now controls the Strait of Hormuz, and they will not give up that control under any circumstances. And that means goodbye to the petrodollar, and that means partially goodbye to U.S. hegemony in this region. That means hello to a stronger alliance between Iran and Russia and China. I mean, there's a lot of stuff that's going to come out of here that people don't understand and aren't counting on yet. But there's some serious consequences that are going to arise from this thing. Do you agree, Esteban? I mean, I feel like the consequences are not being spoken about enough because it's not just about the fuel, right? It's not just about the actual oil or the liquefied natural gas. You're talking about the fertilizers, right? So you're talking about a food crisis. You're talking about helium supplies. Now you're talking about the crisis in the tech sector. And in particular for the US, I would be terrified of this one particular item, because we've been hearing for more than a year now about the AI bubble. And we've been hearing for more than a year now that the US economy only shows growth because of the massive investment that these tech companies are making on data centers. What happens when all of a sudden the chip makers can't make chips anymore and the data centers become redundant and all of that investment falls into risk? You're talking about a catastrophe that would make the 2008 financial crisis look like a day in the park, a sunny day in the park compared to what's looming down the horizon. And then, you have other crises, right? Like just to speak about what's happening, for example, in the southeast of Asia, they've already implemented work from home measures, emergency declarations, energy emergencies. They've canceled school, right? Like people it's essentially we're going back to the pandemic, right? Like many nations. And I feel like in the West, this is still seen as something that is not really going to affect us. You couldn't be more wrong because this is just around the corner. आखिर में हम देखते हैं कि ईरानी खवातीन सड़कों पर किस तरीके से इस्लामी इनकलाब की 47वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आरज़ू برای جمهوری اسلامی इंशाल्लाह तवल्लुद 74 سالگیش آرزو میکنم هر چه زودتر این پرچم برسه دست صاحب اصلیش. انشالله تولد سال دیگه تو بیت المقدس، سال بعدش تو کاخ سفید بگیریم. ایرانمون همیشه سربلند باشه. منم همه هموطنان با فکر تصمیم بگیرن و دیگه هیچ کس پشت به حق نکنه. آرزو میکنم که همیشه واسمون بمونه. انشالله پایان این جنگ، نابودی اسرائیل و خروج تمامی نیروهای آمریکایی از منطقه باشه. به نیت رهبر شهیدم. And victory for all the Iranians and all the people who are suffering all around the world. And there won't be any Americans and Israelis in the middle of it. میکنم که ایرانمون همیشه پایدار و پیروز باشه. میکنم این چند ختم به ظهور بشه انشاءالله. आपने ये वीडियो देखी, क्या आपको ये खवातीन ऑप्रेस नजर आती हैं?
جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا اور پولیٹیشین پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ اس سوال کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پلیز اسے سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور لائک کیجیے. Until next time, خدا حافظ.